Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And in today's session, we will learn how to solve a complete final accounts question. We will prepare trading account, okay, in this given question, profit and loss account and balance sheet. So keep your notebooks ready and follow along step by step, okay? So, and one more question is there. If we are going to solve this, then we are going to solve this, or otherwise, just for your homework, okay? So let's start here. Okay. So first we are going to prepare the trading account, okay? So how you're going to make the trading account of Mr. Amit here for the year ended 31st March 2023, right? So first, like this. Particulars, amount rupees, particulars, amount rupees. Like this, you are going to make debit and credit, okay? By the time you just make it by yourself also, and then the heading also, trading account. Okay, the first you're going to write here in the books of, this is question number 5. In the books of, for example, Mr. Amit here, Mr. Amit, then you're going to put the heading of trading account, then debit side here, credit side here, then particulars, amount, rupees, then particulars, amount rupees. Then always write 2 here and buy. Okay. So this is the beginning of trading account. Now let's see here that what are the things going to be posted in the trading account, right? Capital, no. Drawings, ये सब आपका किसमें आएगा? Balance sheet. Trade expenses in PL, cash in hand, cash at bank, land and building. Now stock. 2, opening stock. Okay, how much is this? 35,000. Then purchases and sales. Now purchases, जब भी आप देखेंगे, always see the returns also. Returns are also given. Purchases are 75,000 less returns. Returns कितनी है आपकी? This is returns is 2,000. Credit side पे होगी purchase return. Okay, तो गलत amount आप मत करिएगा. Purchase return always on the credit side and sales return always on the debit side आपको balance sheet में मिलेगा. If not mentioned, तो आप जो सामने अमाउंट लिखा होगा वो मेंशन कर देंगे, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो यू विल गेट योर 73,000 इन द आउटर कॉलम. फाइन. देन कैरेज इनवर्ड, ऑफ कोर्स कैरेज आउटवर्ड आपका पीएल में जाएगा. तो कैरेज इनवर्ड, दिस इज 1,500. Then carriage outward need debtors, creditors, and balance sheet, bill receivable, bills payable, balance sheet, furniture, discount allowed, PL, wages. Wages is 25,000. अगर यहाँ पे सैलरी पहले लिखा होता तो हम उसको आई थिंक एक जीरो ज्यादा मैंने बढ़ा दिया क्या? ठीक है, तो सैलरी अगर होता, सैलरी एंड वेजेस, तो पीएल में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में.
Wages and salaries are in trading account. Remember this. I think it's sufficient now. Now let's see your sales कहाँ देखना है मुझे. Sales is 2,50,000, returns भी हैं. तो inner column में 2,50,000 less returns 2,800. Debit side पे दिया होगा sales return. So you will get 2,47,200 outer column. And of course, never miss closing stock. यही आपका एक adjustment होता है. Buy closing stock, and this is 40,000. ना इनका टोटल कर लो. ठीक है. आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, डेबिट साइड कम आएगा, राइट. तो इफ मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो 2,47,200 प्लस 40,000, सो यू विल गेट योर 2,87,200. तो ये क्रेडिट का है 2,87,200. और डेबिट साइड का कितना है 35,000 प्लस 73,000 plus 1,500 plus 25,000. So you will get here debit side का total है 1,34,500. इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, ये कम है. क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, राइट. टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर. आप अच्छी राइटिंग करके लिखिएगा, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे पहले पहले टोटल लिख दो. लाइन सीधी स्केल से बनाना. 287,200. 287,200 is the total. Now 287,200 minus 134,500. So you will get 152,700. 1,52,700. Okay, so this is the gross profit. Now I have to make or prepare profit and loss account. Again, we are going to prepare here. Same kind of columns. Okay, इसमें सब में columns एक ही तरह के बनेंगे. Okay, remember this. Particulars amount of rupees, debit and credit. Okay, please make your now इसमें क्या था, profit and loss account. Okay, and mention for the year ended. For the year ended 31st March 2023. Okay, देखो इस पे भी मेंशन करना था ट्रेडिंग अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड ये भी मेंशन करना था. वेरी सॉरी, मैं भूल गई थी. तीनों अकाउंट्स में ही मेंशन करना होता है. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड मार्च. अब 31st मार्च वैसे ही लिख दो जैसे अभी हमने नीचे लिखा है. बोथ द वेज यू कैन राइट. 31st March 2023. Okay, in both the ways. Now here again debit and credit. Particulars amount rupees, then particulars amount rupees. Okay, now first of all पहला step क्या होगा मेरा, I have to just carry forward करना आपको, right. So 2 again here, by here. So by gross profit
transferred from, कहाँ से हो रहा है ट्रांसफर? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना हुआ अमाउंट आपका? 152,700। फर्स्ट ये आपको करना है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग द एंट्रीज। ट्रेड एक्सपेंसेस है 12,000, then cash in hand, cash at bank, stock purchase, sale, returns, carriage outgoing. To carriage outwards 3,500. Debtors, creditors, bills, furniture, discount allowed. To discount allowed. Okay, 1,500. Then salaries. कितनी है salaries? 19,850. Then advertisement. How much? 15,000. Rents, rates, and taxes. How much? 3,500. ठीक है, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, राइट? कोई आपको रिसीव तो करे नहीं आपने इनकम। So now you're going to get the total of this. आप ये रफ में लिखेंगे, है ना? 152,700। और डेबिट का कितना आ रहा है आपका, देखें जरा। 12,000 प्लस 3,500 प्लस 1,500 प्लस 19,850 प्लस 15,000 plus 3,500. So you will get here 55,350. So 152,700 minus 55,350. So you will be getting here 97,350. तो 97,350 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट? अभी मैं इसका लिख रही हूँ। पहले हमने टोटल यहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड। Then I'm going to write here to net profit transferred to capital account 97,350. Till here, I hope no problem. Yes. So before we move on to the balance sheet, a quick reminder, our microeconomics and macroeconomics playlist are already uploaded on the channel. These are extremely helpful for your exam. So don't forget to like, share, and subscribe to Economics at Ease. Okay. Now I'm going to make the balance sheet. So balance sheet as at 31st March 23, right? Liabilities and asset side. Okay. So this is your liabilities side. No debit credit यहाँ पे नहीं लिखते, right? And this is your asset side. Fine. Now first you have to see where is capital, the amount of capital, then drawings and all. Okay. So here you have capital on the liability side,
Inner column 1,55,000. Okay, now add net profit. कितना था net profit आपका? 97,350. Okay, and less drawings. Drawings कितना है? 9,000. Okay, so you will get in the outer column 2,43,350. ठीक है ना, आप देखते जाइए क्या क्या चीजें आपके आएंगी. कैश इन हैंड तो नहीं, अब लैंड एंड बिल्डिंग पहले हम कर लेते हैं. राइट, सो हियर लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रही थी. लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,30,000. देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आप पूरा लिखिएगा 15,400. देन डेटर्स, डेटर्स आपकी गिवन है 48,000 के. देन बिल रिसीवेबल्स 22,000. Okay, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोर्स इसी का एडजस्टमेंट होता है. आपको गिवन है 40,000. देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक and 750 and cash at bank is 22,700. ओके, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स ले लो. नेट प्रॉफिट सब हो गया. क्रेडिटर्स कितने हैं? 25,000. एंड देन बिल्स पेबल यू विल गेट 10,500. ओके, अब इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका इक्वल आना चाहिए. एसेट्स विद द लायबिलिटीज, इसी को कहते हैं बैलेंस शीट. सो यू विल गेट हियर 2,78,850. 2,78,850. I hope now you understand it. So this is how we are going to prepare the trading account first here, then profit and loss account, the same question, and then balance sheet step by step. If you found this session is helpful, so like the video, share it with your friends, subscribe to Economics at least. And this question, the next question is for your homework. Okay, I've already shared you in the beginning of this video. Okay, so see you in the next class. Thank you.